Okay, so let us start with that construction part. So the thing is, we have to find, we have to construct that one a triangle PQR, in which side PQ. So सबसे पहले तो तुम side को measure कर लो. You can measure with a ruler like this. You are having a ruler. Everyone is having. So just measure the side. The side will be like I'm measuring this one from Q to R. It is 6 centimeter exactly. Okay, so we'll measure this one first. We'll name this one. Now let's name the side edge. Yes, here I can write Q. Why it is not writing? Okay, I will write Q. Here I will be writing R. Okay, and it is 6 centimeter. Okay, so this is the first thing. Then see the question once again. What is given? QR is 6 centimeter, that we have already taken. Angle Q is 60 degree. Then PR minus PQ 2 centimeter. So we will draw angle Q now. So let's draw angle Q. Angle Q. So how to draw this angle? See, you will be using Yes, your sir. compass. Okay. So just open it to a certain angle. Okay, and let's take this one to this Q point. You will put your compass over this Q point. Okay, and just a minute. Yes, now you can mark your arc. It is not, suppose you are marking from here. Okay, this is the arc. You can mark like this. Okay, so this arc, now put your compass at this point. Okay, and mark an arc. Here you need to mark. So this first arc, first arc will be of 60 degree. Okay, so through this arc take a line segment now. इस arc से ना, from this Q point and this one, just take a line like this. Okay, now see, over this line that we have drawn now, जो अभी हमने drawn किया है ना, you just mark an arc of 2 centimeter because you are given in the question. Question में तुम्हारे पास दिया हुआ है that PR minus PQ. You can read the question once. It is clearly mentioned there that PR, if you are having here PR, it is not writing. Okay, and minus PQ, somehow it is, sorry, PR minus PQ, it is given as 2 centimeter. No? So we will take this one, then just use your compass. Okay, and open your, see, I have to open this one up to 2 centimeter only. No? So I will just lift my compass from here. See this one, then I will take, okay, just a minute. Yes, this one I will be opening it up to 2 centimeter only. We have to open it. It is a little bit difficult to open it like this one, but somehow I'm trying to open it exactly 2 centimeter if it is possible. No Okay. problem. So you will be measuring it. You can measure it with this one. So now what you will do, you will put your compass over here. You will take your pencil to this point and mark an arc of 2 centimeter here. Suppose I am getting here 2 centimeter, then I will mark this arc over here. This is of 2 centimeter. That means I am getting a point. Here I am getting a point. Suppose this is the point I am getting, A point. I will write here A point. This, okay, yes, this is the A point, where it is 2 centimeter away from this Q point. ये 2 centimeter दूर है. Now what to do? Just join this A point with this R. Okay, इस A को R से join कर दो. With a dotted line you can join. So instead of using a dotted line, I will just use any other color. So it is clearly mentioned to you. I will be taking
हाँ, I will just join from this R to this A. Okay, see, first what I have done, I have taken QR 6 centimeter, then angle Q is drawn at 60 degree, then over this line that I have drawn 60 degree angle, I have taken this A point 2 centimeter away, because 2 centimeter is the difference given. Then now we are joining this A to R with a dotted line, and you can now do what? Perpendicular bisector of this one, perpendicular bisector of this AR you have to take. Okay, so how you will be taking the perpendicular bisector? Just use your compass once again, put your compass over R, open it more than half of this AR. AR का जितना भी half होगा ना, इसको उससे थोड़ा सा ज़्यादा open कर लेना, like this. Okay, suppose I have opened it more than half. Is it? No, थोड़ा सा और open कर लेता हूँ मैं इसको. See, it is now more than half of AR. AR के half से आधा ज़्यादा है. So I will lock it here and I will mark an arc above. Suppose here I will be marking an arc like this. Okay, and then same arc with same measurement I will mark an arc below also. Okay, here also I will be marking. So one arc I will mark here. Okay, and then I will put my compass over this point A. Then I will mark an arc, like I'll cut this arc only. Okay, see this one. Then again I'll take this pencil below, I'll cut this one. Okay, sorry, little difficult issues are there ना, थोड़ा सा difficult होता है इसको. हाँ, so I'll mark this one here. See, now we have got the perpendicular bisector of AR. So what to do now? Just draw a line through this perpendicular bisector, a dotted line again through this perpendicular bisector. See, whatever. See, this line will go like this, huh? And you know what? These two lines will meet. This gray one that I am saying as a dotted line and this black one, they will meet for sure. ये आगे जाके मिल जाएंगी. Okay, suppose I am having this seat, a little bit smaller seat I am having, so it is not meeting here. But when you will construct it, na, it will meet at some point. Okay, so suppose I'll try to join them. Suppose देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, but once you will take it further ना, they will meet. Then take that point as P. उस वाले point को क्या लेना है? You have to take that point as P. जो पॉइंट ऊपर आएगा, एंड देन यू कैन सिंपली ज्वाइन दिस आर टू दैट पॉइंट. आर को उस पॉइंट से तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो सिंपली लाइक दिस. हाँ, ऊपर जाके वो ज्वाइन हो जाएगा एंड यू विल गेट योर ट्राइंगल. जो तुम्हें ट्राइंगल रिक्वायर्ड था वो मिल जाएगा. जस्ट सिंपली यू हैव टू फॉलो दिस कंस्ट्रक्शन रूल. सिंपली ड्रॉ अ लाइन क्यू आर, वट एवर इज गिवन 6 सेंटीमीटर, एंगल इज गिवन, देन वट इज द डिफरेंस गिवन और सम इज गिवन. देखो, अगर सम दिया है तब भी क्या करना है? सेम इसी लाइन के ऊपर तुम्हें आर्क लगाना है. सपोज यू आर गिवन विद सम ऑफ एनी टू साइड, देन ऑल्सो यू विल मार्क एन आर्क ऑन दिस वन. एंड इफ यू आर गिवन विद डिफरेंस ऑफ टू साइड, देन ऑल्सो गिवन इन फोर्थ क्वेश्चन x, y, y, z, z, x. See, the sum of all the three sides of a triangle means perimeter of the triangle is given to us. Whenever we are talking about the sum of all the three sides, that means what? Simply perimeter is given. So, and two angles are given, y and z. So, what is the sum given here? 11 centimeter. So, we will draw a line of 11 centimeter first. Okay, we will take a line. Actually, this writing pad is a little bit striking. So, we'll draw a line of 11 centimeters. Suppose this is the line I am taking. I will name it AB. I'll not name it as XY, because XYZ is what that we require. वो triangle का नाम चाहिए. But we are taking this line AB 11 centimeter. That is equal to what? That is equal to the whole perimeter of the triangle. ये पूरे perimeter के equal है triangle के, जो मैंने 11 सेंटीमीटर लिया है. नाउ what is given in the question is two angles. Angle y is 30, angle z is 90. So what we will do, on one point we will draw an angle of 30 degree, on the other we will draw an angle of 90 degree. एक point पे 30 degree का angle draw करेंगे. Suppose I am drawing like this,
this is 60, then I will bisect 60 and I will get an angle of 30 degree here. This one, just a minute, yes. So this is what I am getting, the angle of 30 degree. And on the other one, I will be drawing an angle of 90 degree. You know how to draw an angle of 90. First you will mark an arc like this, then 60, then 90, then in between 60 and 90 somewhere you will be getting what? A 90 degree angle. Like this, you will be getting 90. Now what you have to do? देखो हमने ये जो एंगल बनाया है ना, it is given to us. This was already given that you have to draw 30 degree, okay, then 90 degree. ये हमने 90 वाला बना लिया. Now what you will be doing? You just take bisector of this angle. ये जो 30 degree वाला एंगल है ना, इसका bisector लेना है. So how you will bisect this angle? 30. Put your compass over here. I will just change the color. Yes, at this point you will put your compass. At this point you will mark two arcs, one from this point, one from this point. And how much angle you will be getting by bisecting 30? 30 को bisect करने पे you will get 15, है ना? So that means here you are getting 15 degree angle. So this is the 15 degree angle you are getting, okay, after bisecting this one. Then also bisect this 90 वाले को भी bisect करना है. कैसे bisect करना है उसको? See, जब तुम लोग इसको रखोगे, अपनी पेंसिल को एक बार रखोगे इधर 90 वाले पॉइंट पे, दिस पॉइंट, एक बार रखना है 0 पे, एंड देन यू विल मार्क एन आर्क लाइक दिस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यू विल गेट एन एंगल. अब तुम्हारे पास एंगल मिलेगा, कितने डिग्री का मिलेगा? नाउ यू विल गेट 45 डिग्री एंगल. करेक्ट, you will get 45 degree. And wherever these two angles, see, एक 30 डिग्री एंगल हुआ है, एक 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब एक 15 डिग्री बना, एक 45 डिग्री बना. सिंपल. देखो एक बार मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ जो जो करना है इसमें. सबसे पहले पेरीमीटर जो दिया हुआ था ना, वट एवर द पेरीमीटर इज गिवन इन क्वेश्चन, मीन्स सम ऑफ ऑल द थ्री साइड, यू विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ दैट मेजरमेंट. देन ड्रॉ द एंगल्स गिवन ऑन द टू पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स पे जो भी एंगल दिया हुआ है उसको कंस्ट्रक्ट करूं. देन बाइसेक्ट द एंगल्स, बाइसेक्ट कर दो. 30 है तो 15 आ गया, 90 था तो 45. नाउ वेयर एवर दीज बाइसेक्टर्स विल मीट, जहां पे ये बाइसेक्टर्स मिलेंगे ना, दैट विल बी वन पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल. ये हमें उस ट्राइंगल का एक पॉइंट मिल गया. एंड विच पॉइंट इज दिस? सी, this is x point. Okay, why I am taking x? Because angle y is already given to us as 30. Okay, and angle z is given to us as 90. ये एक 30 दिया हुआ है, एक 90 दिया हुआ है. That means हम y और z इस पॉइंट को मेंशन नहीं कर सकते. That means we will be mentioning it as the third point, x point. Now we are having this line segment AX. You can see this one AX. ये एक line segment है हमारे पास. Can you make the perpendicular bisector of this AX? AX का perpendicular bisector हम बना सकते हैं. Yes, I will put my compass over A. I will open it more than half. Mark an arc here. Then I will put over A. Then mark an arc here. Similar I will do below also. And this will ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों को एक नया पॉइंट दे रहे हैं. वेयर इट इज गिविंग न्यू पॉइंट? दिस पॉइंट, यू कैन सी दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन AB लाइन. यस, दिस पॉइंट. सो जॉइन दिस विद x. x के साथ उसको ज्वाइन कर दो. ओके, ज्वाइन दिस विद x एंड सी दिस एंगल यू आर गेटिंग इज व्हाट? इट इज इक्वल टू 30. ये 30 वाला है, सो दैट मीन्स इट इज y. तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? y. नाउ यू विल डू व्हाट? यू विल डू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यू विल डू. सो जस्ट पुट योर कंपास ओवर b, ओपन इट मोर देन हाफ, मार्क एन आर्क बिलो एंड अप, देन पुट इट x पे पुट करना है. अगेन यू विल बी मार्किंग सम आर्क लाइक दिस, दैट विल कट द आर्क. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू? जस्ट व्हेन यू विल टेक अ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू, ऐसे एक लाइन लेके आओगे ना तुम, देन इट विल अगेन गिव अस अ पॉइंट. एक पॉइंट फिर से मिलेगा हमें AB लाइन के ऊपर.
and you know what, when you will just join these line, जब join करोगे ना उसको, see suppose I am joining it with x and see what angle I am getting here, 90 degree, Angle sense. है ना. So a 90. right angle, that means this is point z we are getting, and you can check your answer. कैसे check कर सकते हो? If you will measure this angle, it will be 30. If you will measure this angle, it will be 90. This is the first thing. Then measure each side. हर एक साइड को मेजर कर लो. तुम लोगों को पता है कि तीनों का सम कितना आना चाहिए, 11 सेंटीमीटर. जस्ट मेजर ऑल द साइड. सपोज यू आर गेटिंग दिस वन एज 5, this one as 4, this one as 2. So that means what? 5 plus 4 plus 2, you are getting 11. Okay, so try to measure this all the side and check your answer. See this one. See. Find the lateral surface, curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. See, we are having a closed cylindrical tank. तो पहले तो हम एक cylindrical tank बना लेते हैं. My writing pad is not working properly today. Okay, मैं बनाता हूँ यहाँ पे. Suppose this is the closed cylindrical tank we are having. Just थोड़ा सा, हाँ, this one, and it is closed from above and bottom. It is completely closed. So in the first part it is asking about CSA and TSA. Okay, sorry, CSA only. In the first part it is asking about CSA, but in second part, first part you are not having any doubt. Second part, first part में तो simple ना, 2 pi RH formula use करना है. Just you are given with diameter कितना है 4.2 और height कितना है 4.5. Okay, so we will take this one. Diameter is 4.2. So first I'll write here diameter 4.2 centimeter. What is happening? Okay, and height is 4.5 centimeter. It is 4.5 here. Okay, so the thing is, in the first part it is asking about CSA. So CSA is very simple to find. You will be using 2 pi RH. 2 pi RH. This is the formula you will be using, 2 pi RH. Okay, in the first part. But in the second one, second part is saying how much steel was actually used if 1/12 of the total of the sheet actually used was wasted in making the tank. अगर 1/12 पार्ट जो है ना वो वेस्ट हो जाता है तो टोटल कितनी शीट यूज हुई है. सो दैट मीन्स फर्स्ट थिंग वी विल बी फाइंडिंग द TSA. पहले तो हम TSA फाइंड आउट करेंगे. TSA क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. वो बहुत क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है. सो फॉर सेकेंड पार्ट आई एम सॉल्विंग जस्ट सेकेंड, दैट इज द डाउट ऑफ द योर्स. सो सेकेंड पार्ट, सी रेडियस विल बी हाउ मच? इट विल बी 2.1 centimeter. That will be the radius. So that means if I am finding the TSA, it will be 2 pi r plus h. So to find 2 multiply 22 by 7 multiply r is how much? 2.1, and then 2.1 plus h is 4.5. Okay, so just take this decimal 10 and then 7 1 ja 7 3 ja 21. Now you can just add 22 2 ja 44, 44 into 3 you will be doing, it will be 3 4 ja 12, 132 multiply by 2.1 plus 4.5, how much you will be getting? It will be 6.6. 6.6. Okay, you will be getting 6.6. That is what you are getting upon 10. Okay, so this is
that much centimeter square we are getting, or meter square, whatever in the question. Okay, it is in meter square, so that much we are getting the closed cylindrical tank meter square. We can multiply the thing and get our answer. But see, in the question it is written clearly that 1/12 part is lost. 1/12 पार्ट जो है वो खराब भी होता है इसको बनाने में, जो कि हमें फेंकना पड़ता है, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, जो एक्चुअल साइज है वो कितना होगा। तो पहले तो हमें इसका 1/12 पार्ट, ये हमारा टीएस से आया है। अब इसका 1/12 पार्ट अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, सो इट विल बी 132। वी कैन टोटली कैलकुलेट ऑल्सो, हम पूरा कैलकुलेट करके भी ये कर सकते थे, बट आई हैवंट डन। 6.6/10, इस वाले डेसिमल को हटा के भी 100 ले लेते हैं। सो 12 1 जा, देन इट विल बी 12 1 जा, 12 1 जा। सो 11 into 6 it will be 11 6 ja 66, then 11 6 ja 66 plus 6 7 2. So it will be 7.26. You will get here 7.26 meter square. That means this part is what? ये वो वाला part है जो खराब हुआ है, that is lost while making this one, इसको बनाते हुए। Now we will multiply this one, इसको भी पूरा multiply कर लेते हैं। तो 132 multiply by 6 T6 we will be getting 6 2 ja 12, 6 3 ja 18 19, 6 1 ja 6 plus 1 7, multiply 7 9 2, then we are getting 2 1, 9 plus 2 11, 7 plus 9 16 17 and 8 8 7 1. So it will be, see, because we are having 100 in the denominator, so it will be 87.12, 87.12 meter square. That is the part that is used to made this. ये वो वाला पार्ट है जो इसमें लगा हुआ है, बट दिस इज द पार्ट दैट वी लॉस्ट। तो इसका मतलब एक्चुअल हमें कितना चाहिए, एक्चुअल, क्योंकि जो खराब हुआ है स्टार्टिंग में तो हमें ये वाला भी चाहिए ना, वो तो खराब होने के बाद हमें फेंकना पड़ा। बट इफ़ वी आर गोइंग टू मेक दिस टैंक, अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें एक्चुअल कितना चाहिए। इट विल बी 87.12 प्लस 7.26, so that means it will be how much, 6 plus 2 8, 2 plus 1 3, then 7 plus 7 4, then 94.38 meter square. So this will be the answer we will be getting after solving. Okay, see theorem 10.8 जो है, मैं ना यहाँ पे solve तो नहीं, मैं तुम्हें एक hint देता हूँ how you will be solving, then you can watch the previous video also. In that theorem what is there, that the angle subtended by an arc at the center. देखो एक आर्क अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने एक आर्क लिया है, suppose this is the arc I am taking A B. Okay, now this arc will subtend some angle at the center like this one. Okay, and this arc will subtend one angle at any other part of the circle. ये एक अलग part पे भी angle subtend कर सकती है, like if I can subtend an angle like this, एक angle ऐसे subtend करा सकते हैं ना at any part of the circle. So the theorem is saying that if we are having an arc and it is subtending an angle at the center is O, suppose I am taking, and one angle at any part of the circle, then the angle subtended at the center पे जो angle subtend हुआ है ना ये वाला, it is double of this angle, ये इसके double आता है. So this is the theorem 10.8. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at on any point on the circle. Now the thing is how you will prove कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ तुम्हें. Just take a line segment to join this O to that point and also extend it a little bit. हाँ, means if I am taking this point, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाला जो point है P point लिया है, then what, just join P to O and extend it to point, इसको किसी एक point extend कर दो, suppose you are taking this one as Q, यहाँ तक extend कर दो. When you are prove करते हुए ये करना है, when you will be proving, क्योंकि तुम्हें प्रूव क्या करना है इस थ्योरम में, प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट,
double of angle APB. 2 times, it is equal to 2 times of angle APB. This you are going to prove ना कि ये वाला एंगल डबल आएगा इस वाले एंगल के. So this is what you will be doing. Now how to prove? देखो, this angle, is this angle, if I am taking angle 1 and this one I am taking angle 2, are they equal? Angle 1 and 2, क्या ये equal हैं? Angle 1 and 2. Yes, sir. Yes, they are equal because they are angles opposite to equal side. This OP and OB are equal, so that means angle 1 and 2 are equal. So if I am adding angle 1 plus angle 2, can I write it equal to angle 3? सिर्फ ये वाला देखो, इधर वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं, angle 3. Can I write like this? By using exterior angle property. And then angle 1 and 2 are equal, so 2 times angle 2 will be equal to angle 3. देखो, 2 times of this angle 2 is equal to angle 3. Similarly, 2 times of this one, angle 4 will be equal to what? 2 times of this one, angle, sorry, 2 times, angle 5. 2 times of angle 4 will be equal to angle 5. So now add these equations, दोनों को add कर दो, first और second equation को. By adding angle 3 and 5 you will get what? Angle 3 और 5 को add करने पे you will get angle AOB. 2 times, इनमें से दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, 2 times, and by adding angle 2 and 4 you will get angle APB. So this is what the theorem is all about. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the circle. Okay, so let's see what is there in question number 2, 10.5. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. See, we are having a circle, just let us draw a circle here. Okay, then in this circle one chord is there. This is the chord of the circle, and this chord is given equal to the radius. Radius के equal है वो. That means what? All these 3 sides are equal. ये तीनों side equal हैं. This one, this one, this one. And if all the 3 sides of a triangle are equal, then it becomes equilateral triangle. Okay. Equilateral. So that means this angle we can write as 60 degree. Okay. Now the question is, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. अब ये है कि minor arc जो है, देखो अगर मैं इस point को नाम रखता हूँ A, B. So देखो ये जो छोटे वाला है A, B, ये A से लेके B तक, अगर मैं इस वाले रास्ते से जाता हूँ A से B point तक, then it is what? It is the smaller one ना. So it is what? Minor arc. ये minor arc है. एंड द अबव वन, जब मैं अगर ए से बी पॉइंट तक इस वाले रास्ते से घूम के जाने वाला हूँ, देन इट इज व्हाट? दिस इज द मेजर आर्क. सो वी हैव टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस वन एट वन पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, कि ये वाला एंगल कितना आएगा, एंड एट वन पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ये वाला एंगल कितना आएगा. वी हैव टू फाइंड दीज 2 एंगल्स. हमें फाइंड आउट करने हैं ये वाले. एक तो ये वाला एंगल जो है हमारा. सो हाउ मच दिस एंगल विल बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8, यू नो दैट इट विल बी 30. Why 30? 30 because if it is 60, then this angle will be half, so it will be 30. And see how much this one will be. ये वाला कितना आएगा? See this so outer angle. Yes, this outer one will be 300. ये वाला 300 आएगा ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है. 360 में से ये वाला 60 माइनस कर देंगे तो ये 300 आएगा, और इस 300 का हाफ जो है ये वाला, दैट मीन्स इट विल बी 150. So this is there in second question, and one more question is there, that is question number, I think Spurti is asking that one, 11th. This one. ABC and ADC are 2 right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal to angle CBD. देखो ये कह रहे हैं हमारे पास ना 2 ट्राइंगल्स हैं. मैं इसको डिलीट करता हूँ. ABC and ADC. Suppose this one
triangle, right triangle, they are no, they are right triangle. Yes, sir. Yes, they are right triangle, so I have to make right triangles. So let's take a right triangle. Okay, this one I will name this one as A B C. ABC is the one and the other one is ADC, and both are having same hypotenuse. That means what? The other triangle that I will be forming is this one. This is the other one. These are two right triangle with common hypotenuse. दोनों में ना hypotenuse common है. Which is the common hypotenuse? This AC. AC is the common hypotenuse in both. Now the thing is, it is saying that prove that angle, which one? AB, CAD and angle CBD are equal. Angle CAD और CBD को equal prove करना है. So first we will see where is angle CAD. Angle CAD, this angle, this one, we have to prove this angle equal to angle CBD. Angle C, just let me check once again. Yes, angle ABC and ADC are two right triangle on same CAD and CBD. Yes, we will be proving that angle C. Okay, wait, CAD is this one. वी आर टॉकिंग अबाउट CAD ना. ACD मैंने वो वाला एंगल ACD ले लिया था, बट CAD द क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट CAD एंड CBD. ये दो एंगल इक्वल दिखाने, CAD एंड CBD. CBD इज दिस वन. तो हाउ वी विल बी प्रूविंग दीज टू एंगल्स एज इक्वल? कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं? सी दिस AC by using this AC as diameter. अगर मैं इस AC को एज अ डायमीटर यूज करता हूँ ना, इफ आई एम यूजिंग दिस AC एज डायमीटर एंड ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ. सी by using AC as diameter, if I am drawing a circle, then what is happening? क्या हो रहा है उस टाइम पे? दिस B पॉइंट एंड D पॉइंट, B पॉइंट एंड D पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल. B और D भी सर्कल पे ही लाई करेंगे. वाई दे विल लाई ऑन द सर्कल? बिकॉज वेन एवर सी दिस AC इज वट, ये AC क्या है यहाँ पे सर्कल के लिए? इट इज डायमीटर ना. एंड वेन एवर अ डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक डायमीटर अगर सबटेंड करता है ना एंगल 90 डिग्री का, तो वो सर्कल के किसी पार्ट पे ही करता है, अंदर नहीं करेगा वो. इट विल नॉट डू. ऐसा नहीं होगा कि तुम एक सर्कल से मतलब ये AC एक डायमीटर है एंड यू आर एबल टू ड्रॉ कि सर मैंने 90 डिग्री का एंगल ना सर्कल के अंदर बना दिया. इट विल नॉट बी पॉसिबल. ऐसा होता ही नहीं है. So if this angle is 90 degree and it is joined to diameter na, that means this D point is where? This D point is on the circle. Similarly this B point is also on the circle because this is given कि angle ABCB क्या है? एक 90 degree angle है. So that means all the 4 points are where? All the 4 points are on circle na. This is the first thing. Now the thing is, if all the 4 points are on circle, then this CD will become what? CD क्या हो गया? एक CD एक सेगमेंट बन जाएगा ना. ये देखो ये सेगमेंट बन गया है ये वाला. और जब एक सेगमेंट से कोई भी दो एंगल सर्कल पे बनते हैं, वेन एवर अ सेगमेंट इज सबटेंडिंग टू इक्वल टू एंगल्स एट द सर्कल. सी दिस CD, ये CD ने एक एंगल कौन सा बनाया है सर्कल पे? ये वाला CAD. देख लो ना CAD, इसमें CD इंक्लूडेड है. दूसरा कौन सा बनाया? CBD, इसमें भी कौन इंक्लूडेड है? CD. तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. यू मस्ट हैव लर्न दैट थ्योरम, वो याद होगी तुम्हें. एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट आर इक्वल. एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. एक थ्योरम मैंने पढ़ाई थी तुम लोगों को कि अगर सेम सेगमेंट से एंगल सबटेंड होते हैं दे आर इक्वल, वो इक्वल आते हैं.